स्टूडेंट्स 5 मिनट्स पर जरा फॉर्मूलाज रिवाइज करो 1 मिनट थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है फॉर्मूला सब रिवाइज करो फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स बड़ा चलो मुझे आंसर दो if A and B are the two independent events then the probability of occurring both the events is given by the probability of occurring both the events is given by answer दो मुझे don't leave the class answer the one is A and B B dash other one is A dash and B and third one is A dash and B dash चलो next if A if A, B, and C are the three independent events, then the probability of occurring all the three events is given by probability of A intersection B intersection C is given by correct. It is P of A into P of B into P of C. Correct. But if A, B, and C are the three independent events, so in that case, A dash, B dash, and C dash they are also considered to be as independent. Say the given statement, but it is a true or false. False. Take out the sum sort. And in that given sum, come to sum number 24. Mark this given sum to be as very important.
sum number 24. Mark this sum to be as very important. Problem is probability was given to the three students, was given to the three CA students, A, B, and C, whose chances of solving are 1 by 3, 1 by 5, and 1 by 2, respectively. What is the probability the problem will be solved? But you want to find the probability in which the problem will be solved. इसका मतलब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम तो बड़ा कोई भी सॉल्व कर सकता है. प्रॉब्लम जो है वो तो बड़ा कोई भी सॉल्व कर सकता है कि नहीं बेटा, है ना. प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बेटा आइदर बाय ए, और बेटा इट कैन बी सॉल्व बेटा आइदर बाय बी, और बेटा इट कैन बी सॉल्व आइदर बाय सी. और ये सब में बड़ा एक बार फिर से तुम लोग को सबने बड़ा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1 by 3. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म इज बड़ा 1 by 3. 1 by 3 का मतलब ये हो कि द थ्री प्रॉब्लम आर बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट. तो आउट ऑफ द थ्री ए विल एबल टू सॉल्व one problem. Probability of B is given to be as 1 by 5. इसका मतलब बड़ा if the 5 sums are given to B, out of that 5 B will able to solve any one sum. Probability of C is given to be as 1 by 2. इसका मतलब out of the two problem C will able to solve any one of them. इसका मतलब we want to find the probability in which the problem is solved. मैंने क्या बोला था प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आइदर बाय ए और बाय बी और बाय सी. तो कोई मुझे बता सकता है कि मैथमेटिकली व्हाट वी वांट टू फाइंड इन सम नंबर 24. your aim is to find probability of A union B union C. अच्छा, now do you remember the formula? मैंने तुम लोग को corollaries of addition theorem में पढ़ाया था. Probability of A union B union C which is equal to P of A plus P of B plus बड़ा P of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus the probability of A intersection C plus the probability of A intersection B intersection C. अब सब लोग बड़ा एक बार चेक कर लो कि तुम्हारे पास बड़ा सम में क्या है. In the given sum बड़ा ये देखिए, you know the value of P of A, P of B
पी ऑफ सी, ये 3 वैल्यूज बेटा तुम लोग के पास है। अब मुझे फटाफट बताओ बेटा, हाउ यू विल फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुम लोग ने एक करेक्ट आंसर दे दिया बेटा तो बाकी के सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे तुम लोग को। Anyone who can try what probability of A intersection B correct. Answer will be in the form of P of A into P of B by using the multiplication theorem. Probability of B intersection C. Again, it will be in the form of P of B into P of C. Probability of A intersection C. It will be in the form of P of A into P of C. And probability of A intersection B intersection C. Answer will be equal to P of A into beta P of B into P of C. मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? मैं ये मेथड करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे तुम लोग का बड़ा टाइम बहुत वेस्ट होगा। यू विल गेट द आंसर करेक्ट बड़ा, बट यहाँ पे टाइम जो है बड़ा बहुत वेस्ट होगा। तो इन दैट केस चलो लेट वी स्टार्ट विद द अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, तो अल्टरनेट मेथड बड़ा क्या हो सकता है ये देखो। We know that P of A plus P of A dash answer is always equal to रिप्लाई करो बड़ा फटाफट। P of A plus P of A dash the answer is equal to the answer is बड़ा 1। इसका मतलब probability of happening plus probability of not happening will be always equal to 1। अब ये देख बड़ा हैपनिंग क्या है यहाँ पे, probability in which the problem is solved plus probability in which the problem is unsolvable। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
Answer will be always equal to 1. What is your aim is to find bottom? What is your aim is to find bottom? The probability in which the problem is solved. Answer is equal to 1 minus probability in which the problem is unsolved. But the problem is solved. The problem can be solved either by A or by B or by C. ये देखो. It is the probability of A union B union C is equal to 1 minus the problem is unsolved. बड़ा प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सका. ए भी नहीं सॉल्व कर सका, बी भी सॉल्व नहीं कर सका और बी भी सॉल्व नहीं कर सका. इट इज नाइदर सॉल्व बाय ए नॉर बाय बी एंड बाय सी. तो मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बड़ा बी डैश इंटरसेक्शन बड़ा सी डैश. और रही बात बड़ा ये A dash, B dash, and C dash here. This will result to 1 minus probability of A dash into the probability of B dash into the probability of C dash. तो ये मेथड से बड़ा सेकेंड मेथड से हमको सॉल्व करना ये काफी बड़ा इजी होगा. दैट इज माय पर्सनल एडवाइस एंड पर्सनल सजेशन फॉर यू. बाकी इट इज अप टू यू. तुम्हें जो इजी लगे बड़ा वो तुम लोग कर सकते हो. तो चल बड़ा इन द गिवन सम you are being known but with the probability. You are being known but with the probability of A is equal to 1 by 3. Probability of B is equal to 1 by 5. And probability of C is equal to probability of C is equal to 1 by 2. तो करस्पॉन्डिंगली अब यहाँ पे भी तुम लोग को P of A dash, P of B dash और P of C dash मिलेगा कि नहीं बेटा? चल भाई मुझे फटाफट आंसर चाहिए.
What is probability of A dash? So, right, what is probability of B dash? And what is probability of the C dash? है ना? और इसके बाद फिर ये देखो, यहाँ से ये मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मैंने जो येलो कलर से किया है ना वहां से स्टार्ट कर दो सॉल्व। चलो वेरी गुड। चलो now we have entered into the last part of the probability. We have entered into the last part of probability, in which we are going to study the definition of probability. Definition of probability in terms of the odds, odds in favor or odds against the event. Definition of probability in terms of odds in favor or odds in against the event. तो here in this case सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि odds means क्या होता है यहाँ पे। The meaning of the term odds, it means it is a ratio. Whenever in the given sum, when you will be known with the ratio, what will be known with the ratio? Ratio which will be given in the terms of favor, or the ratio which will be given in terms of ratio which will be given in terms of favor, and the ratio which will be given in terms of against. And by knowing that your aim will be to find the probability. Your aim it will be to find the probability by using that ratio. तो ये तुम लोग कैसे फाइंड करोगे, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है if the odds in the favor of an event A, they are given in the ratio x is to y. They are given in the ratio of x is to y. Then the formula for finding the probability of an event A is given by P of A
is equal to x upon x plus y. You can put it in box. P of A is equal to x upon x plus y. And very easily you can learn this formula to be as ये देखो x it is in the place of numerator and y it is in the place of denominator. So you can learn this given formula to be as numerator upon numerator plus denominator. कैसे फॉर्मूला लर्न करोगे बड़ा एक बार मुझे बताओ. न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. बट ये टेक्निक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करनी है when the odds are given in the favor of the event. When the odds are given in the favor of the event. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ.